Hi guys, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will be discussing CSE 2023's paper and try to solve a few questions using some logic or some elimination tricks. Firstly, a huge thank you for showing so much love to our previous video, especially the video of elimination tricks. Before we start today's video, I have a caveat to give out to everyone. I got a lot of comments on that video that these elimination tricks are not working anymore. See, the logic behind these elimination tricks or certain logics that are useful in UPSC, they do work despite the change in pattern. But while using these logics, keep one thing in mind, that these logics or these elimination tricks are like strap-on engines that are used in a rocket. So these are like strap-on engines. They will help you only to boost your score, and they won't help you to generate your score. That is, these tricks will help you take your score from 85, 90 to 110. Okay. It is your basic knowledge, it is your basic hold over static and current affairs that will help you gain the first 0 to 85 marks. So unless and until you have good hold over your static, over your current affairs, these elimination tricks won't help you clear prelims. So take these tricks as just booster strap on engines to boost your score and to remain in the safe side after the cutoff is declared. Okay, so having given the caveat, let us start discussing the 2023 paper. So see, in 2023 paper I could find around 20 odd questions where we can use some logic, some elimination trick. The first question where we can use some logic is question number 5. So if you look at the question says that which one of the following is best example of repeated falls in sea level, giving rise to present day extensive marshland. Now a person who is preparing seriously for UPSC will know out of these four options given, only Run of Kutch is a famous marshland where sea level has fallen down. But even if you are not knowing it, even if you do not have any content, you can solve this question by good observation skills in your exam. Now if you look at the Hindi translation of this question, the question itself says Kutch Bhumi. So the question itself is giving you the answer. It is asking about Kutch Bhumi and it is related to obviously Run of Kutch. Okay. So at times looking at Hindi translation will also help you get some insight, get some link, get some logic to solve the question. Okay. After that, if you look at question number 6, again question number 6 can also be solved using some elimination trick. Now the question says that ilmenite is abundantly available in certain coastal tracts of India and is a rich source of which one of the following. So when it comes to all the ores that are mentioned over here, be it aluminium, copper, iron, we are aware about the broader location about these uh, ores of these metals. So nowhere we have read that these metals like aluminium, copper or iron are available in the coastal tracts of India. Okay, so coastal tract is sort of a आपके लिए hint over this question, or the words like eliminate. Now we haven't read about some ores of iron or copper which says about this, because these are very common metals, we have read about them in our preparation. The only option remaining about which we have no idea and which can possibly be the answer is titanium, and this is the logic I used. I while solving the question I always had faith in my preparation. अगर मैंने अपने प्रिपरेशन में पढ़ा है तो मेरे को एग्जाम में याद आएगा, ये कॉन्फिडेंस लेके जाओ. अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स कि वो ऑप्शन गलत है. ठीक है, जैसे इन दिस केस वी have faith in the fact that you have read about aluminium, copper, iron ore ke mines in India, and nowhere have you read that these three metals are found in the coastal tracts. So the only remaining option is titanium, and with this logic I mark titanium as the answer, and that is the correct answer. ठीक है, उसके बाद the next question that you can solve using some
logic or elimination trick is question number 11. Now if you look at question number 11, you can see that the first statement says India, despite having uranium deposit, depends on coal for most of its electricity production. Now again, it is a very commonsensical statement. Most of us know that around 55 to 60% of our electricity production still comes from coal. ठीक है, भले ही माना आपने हमने कि आपको ये बिल्कुल ही नहीं पता. Let us look at the second statement. The second statement says uranium enriched to extent of at least 60% is required for production of electricity. अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, जब भी यूपीएससी कोई डेटा दे रहा है या कोई फैक्ट दे रहा है या कोई नंबर दे रहा है, इट इज मोस्टली इनकरेक्ट. एंड बाय दिस लॉजिक, इफ यू कंसिडर this statement to be incorrect, automatically you are reaching to the answer, that is C, which is the correct answer. Now people who are aware about what percentage is required for uranium for production of electricity, do comment down below कितना परसेंट enriched uranium चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, वो कमेंट सेक्शन में लिख देना. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11 you can also solve question number 12 using similar logics. ठीक है. Now if you look at the first statement of question number 12, it says that marsupials are not naturally found in India. ठीक है, अब हमको पता ही नहीं है मार्सुपियल्स क्या होते हैं, whether they are found in India or not found in India. Let us look at the second statement. The second statement says marsupial can thrive only in mountain grasslands and with no predators. Now जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि whenever there are extreme statements where UPSC is using words like only, all, they are mostly incorrect. By this logic, if you consider this statement to be incorrect, automatically you reach to the answer, which is the correct answer. Again, if you read the statement carefully, it seems illogical. Marsupials can thrive only in mountain grasslands with no predators. Now can there be any habitat where there are no predators of any species? This seems to be illogical, right? So उससे भी you can eliminate this statement and automatically reach to the answer. ठीक है. उसके बाद if you look at question number 13, again you can solve it by some logic. जैसे the question number 13 is asking you about invasive species specialist group. ठीक है, and it is under which organization. Now if you look at the question carefully, it is saying that invasive species specialist group, it develops global invasive species database. अब यूपीएससी को कुछ ना कुछ मैसेज देना है आपको, इसीलिए ये वर्ड्स इंक्लूड किए गए क्वेश्चन में. अगर उनको आपको हिंट नहीं देना होता तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता कि इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. दिस like global invasive species database has been included in the question because UPSC wants you to give some hint. Now if you look at the options, we are all aware that only IUCN, amongst these options, only IUCN is a body that gives out certain database related to some species. We all know about the red book of IUCN, right? जहाँ पे endangered, critically endangered सारे species enlist किए जाते हैं. So such database is maintained by IUCN only, and with that logic I marked IUCN as the option, and that is the correct answer. Again, the words global invasive species database have been given in question just to give you some hint and hint you towards the answer. ठीक है. So always keep in mind while solving the question, read each and every word very diligently. At times UPSC itself is giving you hints कि हाँ इस वर्ड से ये हिंट उठा के you can reach to the answer. ठीक है. After question number 13, again question number 15 can also be solved with normal basic street smartness या basic observation skills. Now if you look at question number 15, it says that which of the following organism performs waggle dance. अब इस क्वेश्चन में बहुत लोगों के क्या साथ ये हुआ कि बाय जस्ट रीडिंग द टर्म वॉगल डांस दे लेफ्ट द क्वेश्चन कि इसके बारे में तो कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं था, अब ये कहाँ से हम सॉल्व करेंगे. बट इफ यू लुक at the further description, it says that this woggle dance is for their kin to indicate the direction and distance to the source of their food. Now amongst the option, we all see honeybees are the organisms that are more community oriented, right? जो एक दूसरे के साथ रह रहे, which are building a community, they are traveling
in communities towards the source of food. So these words are incorporated in the question to give you a hint ki ha in this community like behavior is related to which organisms in the options. This is the hint given in this question. A lot of people just by reading the term woggle dance left the question and thought that we haven't read about this, we are not aware about this, and did not attempt the question. Again, just try to read each and every word that is given in the question and try to find out some hint that is hidden in the question. Okay, after question number 15 you can also solve question number 16 using certain elimination tricks. Now this is the question that we had discussed in our previous video also. See, whenever there are generic statements given in UPSC prelims, they are mostly true. Now this question says some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties. अब some mushrooms है, that means the examiner is trying to make it so generic that it stands true under any circumstance, right? तो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा इसको जेनेरिक बना रहा है ताकि वो ट्रू रहे. दैट्स व्हाई I marked all four as the answer using the trick that generic statements tend to be true in UPSC prelims, and that is correct even in this case. So always keep in mind whenever there are generic statements, consider them to be right, and it is a pattern seen in UPSC prelims. ठीक. After that you can also use elimination trick in question number 18. सिमिलर एलिमिनेशन ट्रिक, जैसे वहां पे सम मशरूम्स था, यहाँ पे सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड बाय द सेम लॉजिक दैट जेनेरिक स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, आई मार्क्ड सी एज द आंसर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो ऑलवेज कीपिंग दिस माइंड कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग while generic statements are correct. Now the next question, again question number 19, is a question that I solved using some basic observational skills or basic street smartness. If you read the question number 19, it asks you which of the following makes a tool with a stick to scrape insects from hole in a tree or a log of a wood. Now making a tool to scrape insects, isn't it a evolved feature? ठीक है, ये human like behavior नहीं है, it is a evolved feature. Now out of the options, be it fishing cat, otter or sloth bears, only orangutan is more evolved animal in the evolution ka phase. Orangutan is one of the apes, right, which is nearer to humans, and that is why it is showing human like behavior of creating tools, and that's why I mark B as the option, and that is the correct answer given by UPSC as well. So try to look at such hints given in the question, or try to use basic street smartness, basic observations that you do in regular life to reach to the answer. So while solving UPSC prelims, do not just limit yourself to the bookish knowledge, do not just be bookish nerds. UPSC wants street smart people, and that is why UPSC is setting such papers. ठीक है, उसके बाद if you look at question number 20, the question asks you about which of the following are like in which of the following hydrofluorocarbons, that is your HFCs, are used. अब हमने HFCs के बारे में तो पढ़ा है. Mention in the comment in which protocol have you read about HFCs and CFCs, and what is its amendment protocol also called. Do mention it in the comment box. Now if you look at the question, it is asking ki HFCs are used in production of which of the following, that is aerosols, foam agents, fire retardants, lubricants. Ab in UPSC previous year questions, while solving the previous year questions, I had seen one pattern since 2020 or 21. UPSC is doing one thing: whenever there is a question related to environmental pollutants or some production process in environment, or some like emissions in environment questions, it is avoiding all of the above as the answer. Now this was a pattern that I had seen in previous year questions. Now apart from this pattern, while reading all these four materials, I could see that lubricants as such is a very broad term, right? Now lubricants can be both industrial lubricants as well as lubricants used in our daily lives. So
it is not necessary that HFCs are used in each and every lubricant. So it is a very broad term. कोई ना कोई lubricant होगा जहाँ पे HFCs are not used. So this can be a issue for UPSC to defend its answer. So automatically I eliminated lubricants and I marked C as the answer, only 3, both based on the pattern of UPSC, that whenever in environmental questions like emission के questions पूछ रहा है या production के question पूछ रहा है, UPSC is avoiding all 4 as the answers. Using that logic and this logic that lubricants is a very broad category, I eliminated it and marked only 3 as the answer, and that is the correct answer given by UPSC. ठीक है. After that, if you look at question number 21, now question number 21, again the first statement of question number 21, it is related to InvITs. Now the statement says interest income from the deposit in InvITs distributed to their investors are exempted from tax, but dividends is taxable. Now whenever there is some complex statement or compound statement given in any question in UPSC, read it twice, because UPSC has this habit of adding something extra to a correct statement and making it wrong. जैसे इस केस में it has added but and the next part in the statement and try to make it incorrect. Now secondly, ये एक लॉजिक है कि कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और देखो यूपीएससी जानबूझ के कहीं गलत तो नहीं कर रहा. सेकेंडली, इफ यू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, डजंट इट सीम इलॉजिकल कि इंटरेस्ट को तो आप टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रहे हो बट डिविडेंड को टैक्स कर रहे हो. Now this seems illogical, right? That's why I considered this statement to be incorrect and automatically I reach to the right answer. ठीक है. So always keep in mind, whenever there are complex statements, compound statements, read those statements with some extra carefulness, with some attention to detail, and try to find out whether UPSC has tried to play some game. ठीक है. After this, question number 26 is where again we can use some logic or some elimination trick. Now this is a question that we had discussed in our previous video as well. The question related to small farmers large field. Can you tell me in comment box what is the trick that we used here? I will explain it even now, but make sure that you are commenting down below what is the trick that I had explained regarding this particular question. Now when it comes to any question, read all the options carefully and try to see whether there are few similar sounding options. Whenever there are a few similar sounding options, mostly the answer is between them. Jaise in this case, if you look at option B and option C, both are saying something about many marginal farmers, many marginal farmers. तो दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन कि आंसर होगा तो बी या सी के बीच में से होगा, बिकॉज यूपीएससी डज दिस. अगर सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन दे रहा है तो आंसर उन दोनों के बीच में ही होगा. ठीक है. सो आई रेड both option B and option C carefully. Now option C says that many marginal farmers in an area together come to and make a contract with corporate body and surrender their land. अब surrendering their land is some sort of extreme. ठीक है. ऐसा कुछ कभी सुना नहीं है ना, ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई गवर्नमेंट होने भी नहीं देगा. व्हाई वुड इट disempower its own farmers and empower the corporate sector, right? It seems illogical, so I considered this incorrect and marked this as the option, and that was the correct option given by UPSC as well. ठीक है. So always keep in mind, whenever there are similar sounding options, answer is most probably between them only. ठीक है. Next, in a logic can be used again in question number 28. Very basic logic, the logic that I call as decoding English. ठीक है. If you look at question number 28, it is asking about amongst the given assets which of the following can be considered to be intangible investments. ठीक है. अब intangible का मतलब क्या होता है? The very basic English Oxford dictionary meaning of intangible is something which you cannot touch. अब इन चार चीजों में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते? जैसे इन्वेंट्री इज समथिंग फिजिकल, यू कैन टच. इन्वेंट्री इज नथिंग बट योर स्टॉक, राइट? स्टॉक ऑफ थिंग्स. जैसे कोई रॉ मटेरियल है, कुछ फिनिश्ड गुड्स है, दे आर काउंटेड इन इन्वेंट्री विच यू कैन टच, सो दे आर टेंजिबल. तो इसको हटा दिया. ब्रांड रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली यू कैन नॉट touch brand recognition. Like Apple as a brand is very famous, but can you touch Apple as a brand? Apple के products you can touch, they are tangible, but brand is intangible. तो ये सही होगा. Intellectual property, similar.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट यू कैन टच बट नॉट द प्रॉपर्टी एज सच, इट इज एन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इंटेंजिबल थिंग विच यू कैनॉट टच एज सच. ठीक है, बाय बेसिक इंग्लिश डिकोडिंग आई कुड गेट दिस question correct. I marked only 3 as the right option, and that is the correct option given by UPSC as well. So at times just looking at the words given in the question and decoding the words can help you solve the question. There are a few questions later on in the same paper, I will discuss them also. So always remember, decoding of English can also help you solve the paper properly. ठीक है, उसके बाद आफ्टर क्वेश्चन नंबर 28 you can solve the next question with some logic. Is again question number 37. If you look at this question, it is related to finance bill and money bill in Indian Parliament. The first statement says when the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Now we are aware कि finance bill under article 117 there are two types of finance bill, finance bill 1 and finance bill 2. Rajya Sabha has equal power when it comes to finance bill for both finance bill 1 and finance bill 2, so it can amend or reject, so this is correct. Second is when Lok Sabha transmits money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendation. This is also correct. Very basic understanding of polity will help you know this. Now comment down below the article of money bill, under which article is money bill given, under which article is appropriation bill given. Okay, now the third statement where you can use some elimination trick. Now the third statement says in case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, जब कोई बट एंड और लगा के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़ो बिकॉज यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ मेकिंग इट इनकरेक्ट. अगर आप बट के बाद का पढ़ोगे, इट सेज दैट जॉइंट सिटिंग becomes necessary for finance bill. Isn't it extreme, sort of extreme? Doesn't it sound extreme कि finance bill के लिए it becomes necessary? ये तो joint sitting is तो not necessary for even ordinary bill. If the party in power wants it to be passed, it can go forward with joint sitting. तो joint sitting as such is not compulsory. तो finance bill के लिए कहाँ से compulsory होगा? तो एक तो आप कंपाउंड स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट जोड़ के एक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश किया है यूपीएससी ने, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहा है. एंड सेकेंडली इट इज साउंडिंग एक्सट्रीम. बाय दिस लॉजिक ऑल्सो यू आर एबल टू एलिमिनेट स्टेटमेंट 3 एंड यू आर गेटिंग द राइट आंसर, दैट इज ओनली 2. ठीक है, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि अगर कोई दो तीन स्टेटमेंट जोड़ के एक स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यूपीएससी को ये आदत है कि कुछ ना कुछ माइनर ट्विक करके वो स्टेटमेंट गलत कर देगा. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वेर यू कैन यूज some elimination trick is again question number 40. Now this is a elimination, in this question you can use the elimination trick that we had discussed in our previous video on elimination tricks. Statement 1 says Supreme Court of India has held in some judgments that reservation policies made under article 16(4) of the Constitution of India would be limited by article 335 for maintenance of efficiency in administration. चलो मान लिया कि आपको ऐसा कोई जजमेंट ही नहीं पता है. ठीक है, let us read the second statement. The second statement says Article 335 of Constitution of India defines the term efficiency of administration. अब हमारा लॉजिक क्या कहता है, हमारा पैटर्न क्या कहता है, यूपीएससी के क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, तो इट इज मोस्टली इनकरेक्ट. जैसे that day in that previous video I had shown you 3 such examples in the past 5 years where this logic holds कि constitution defines बोला है, तो it is mostly incorrect. And by this logic if you consider this incorrect, automatically you are reaching to the right answer. ठीक है, now can you comment down below the article under which various definitions are given in constitution? Do comment down below the article where definitions are given. After question number 40 you can also use logic or some understanding in question number 47. The question number 47 says कि souls are not only the property of animals and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects. ठीक है, अब
बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी को भी होगा तो हमको पता है मेजरली सोल के बारे में कौन बोलता है, जैनिज्म। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सेकेंडली, इफ यू हैव सॉल्व यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थॉरोली, तो देर इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 2023 where there was a statement mentioned in that question which says कि Jainism believes in the idea that everything is made up of soul। ठीक है, so UPSC is using the statement asked in a previous year question and making up question from them। So in our previous videos we have also discussed that when it comes to ancient medieval art and culture, look at the previous year questions, read about the statements mentioned there, option mentioned there, because UPSC is preparing new questions, potential questions based on the statements given। जैसे यहाँ पे किया 2013 के क्वेश्चन से 2023 में क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 47 द नेक्स्ट क्वेश्चन विच can be solved using some basic logic or understanding is question number 52। now if you look at the question number 52, it is talking about anemia mukt bharat strategy। it is talking something about anemia mukt bharat strategy। now the first statement says कि it provides like calcium supplements for preschool children, adolescent and pregnant women। अब अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एनीमिया इज व्हाट, एनीमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, राइट। एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी है, उससे मुक्त करना है भारत को, तो हम कैल्शियम क्यों देंगे, बेसिक लॉजिक है, कॉमन सेंस है। ये यूज किया, मैंने पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया, चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जस्ट बाय बेसिक कॉमन सेंस you can eliminate one option। if you read the second statement, it runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth। now this is something that you can the people who are aware about how things are done in labor room can know, because nowadays the doctors are prescribing कि थोड़ा delayed clamping करो ताकि आयन का there is flow of iron in child। ठीक है, so for the next three statements you need some sort of अंडरस्टैंडिंग और सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। चलो आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट 2 के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए था। स्टेटमेंट 3, नाउ इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियडिक डीवर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी ने गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग किया है तो वहां पे फ्रीली ये टैबलेट्स दिए जाते थे, तो ये भी सही हो सकता है, right। and statement 4, it says that it addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with specific focus on malaria and fluorosis वगैरह। तो वेरी लाइक कॉमन सेंसिकल लॉजिकल स्टेटमेंट कि बस हमको सिम्टम्स ट्रीट नहीं करने, बस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस को भी ट्रीट करना है। ठीक है, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन बन जाए। दैट्स व्हाई आई कंसिडर दिस टू बी करेक्ट एंड आई हैड अ रफ आइडिया अबाउट दिस, आई हैड सम नॉलेज अबाउट इट, सो आई कंसिडर दिस टू बी, आई न्यू दिस इज करेक्ट एंड दिस ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग हुआ था, वहां पे तो मिलता था टैबलेट्स, तो ऑटोमेटिकली आई मार्क only 3 as the right option and that is the correct answer given by UPSC। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करने के लिए बेसिक डिकोडिंग यूज कर सकते हो कि एनीमिया इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, तो ये नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इतना तो एलिमिनेशन ट्रिक या बेसिक लॉजिक से निकल रहा है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 52, अगेन क्वेश्चन नंबर 53 is something you can solve using elimination trick। now the first statement of question number 53 says carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobiles and aircrafts। अब सभी को पता है कि कार्बन फाइबर्स इज अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, बहुत सारे स्पोर्ट्स कार है उनमें कार्बन फाइबर यूज किया जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैक्लारेंस वेयर कार्बन फाइबर इज बिकमिंग देयर कोर मटेरियल, या गाड़ियों में जो स्पॉइलर लगाया जा रहा है स्पोर्ट्स कार में, F1 रेसेस में, उसमें कार्बन फाइबर यूज किया जा रहा है। तो बेसिक नॉन टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंडिंग ऑफ real life things can help you get this statement to be correct। and second statement says carbon fiber once used cannot be recycled। अब ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लग रहा, cannot be recycled, ऐसा कैसे है भाई कि रिसाइकल नहीं हो सकता, आगे जाके कुछ ना कुछ रिसाइकलिंग तो टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो कैनॉट बी रिसाइकल्ड इज एक्सट्रीम। सेकेंडली, नाउ कार्बन फाइबर्स आर न्यू टेक्नोलॉजी, अगर ये रिसाइकल ही नहीं हो पाता तो कोई इसमें इतना रिसर्च
करता क्या, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ऐसा चीज में इन्वेस्ट ही क्यों करो जो रिसाइकल नहीं हो सकती। तो बाय दिस लॉजिक ऑल्सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड ऑटोमेटिकली you are left with the right answer, that is one only, A. ठीक है, so basic understanding about real life things and the logic that extremes are wrong can help you get this question correct. Now the next question that can be solved using elimination trick is again question number 58. Now in question number 58 you can use the logic that we had discussed in our previous video, the logic that I call as ulta fulta. Now this is nothing but UPSC has this peculiar habit of interchanging the descriptions. जैसे इस पहले स्टेटमेंट में देखोगे, it says ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. If you look at these statement, it seems that UPSC has interchanged the description. Okay. After that, if you look at the second statement, again similar thing has been done. Agni 5 is a medium range supersonic missile and BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missile. यहाँ पे भी interchange किया गया है. ठीक है. So again उल्टा फुल्टा वाला logic. So both are incorrect. Now mostly because of Operation Sindoor and the recent conflict, you guys must have read about Agni missiles. ठीक है, तो अब तो सभी के पास नॉलेज है, तब इतना डिफेंस कोई पढ़ता नहीं था 2023 में जब क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक लॉजिक से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि हाँ दिख रहा है कि ऊपर नीचे किया गया है। ठीक है, सो उल्टा फुल्टा वाला लॉजिक एंड आई गॉट द क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग सम बेसिक understanding or where a few statement can be eliminated is question number 59. It is related to mercury pollution. If you read the first statement ki gold mining activity is a source of mercury pollution in the world, seems true, seems correct. ठीक है, इनकरेक्ट होने का कोई एज सच रीजन नहीं लग रहा मुझे, चलो फिर भी मान लिया कि बात पता नहीं है। सेकंड सेज कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन, ये भी सही है। नाउ अगर आपको कभी थर्मल पावर प्लांट्स के एमिशन में जो जो चीजें मेजर इमिशन से पड़े हैं तो उसमें मर्क्यूरी इज अ मेजर इमिशन इन थर्मल पावर प्लांट्स, चलो ठीक है मान लिया, ये भी नहीं पता। थर्ड स्टेटमेंट तो यू कैन टोटली एलिमिनेट यूजिंग आवर लॉजिक। द थर्ड स्टेटमेंट सेज देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। अब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा कि आज तक ऐसा पता ही नहीं चला कि कितना एक्सपोजर होना चाहिए मर्क्यूरी के लिए। दिस इज इलॉजिकल, दिस सीम्स एक्सट्रीम। अगर ये स्टेटमेंट एलिमिनेट कर रहे हो तो एटलीस्ट यू आर एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन। ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी 33% पे आ रहा है। अगेन यूजिंग आवर लॉजिक दैट एक्सट्रीम स्टेटमेंट आर मोस्टली रॉन्ग। ठीक है, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 59 you can also solve a few more questions in this same paper. Now before going to the next questions, can you tell me the disease that is caused by mercury pollution? Type in the comment the disease that is caused by mercury pollution and the convention that is uh, looking after mercury pollution. ठीक है, द कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटेड टू मर्क्यूरी पोल्यूशन कौन सा है, कमेंट करना नीचे। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 59 नाउ यू कैन सॉल्व again question number 66 using some elimination trick। जैसे जो अपन ने elimination trick यूज किया है इससे पहले भी कि extremes are mostly wrong। अब look at the statement question, it says that with reference to coal based thermal power plants in India, which of the following statements are correct? Now first says none of them uses sea water, कोई सी वाटर यूज ही नहीं कर रहा, एक्सट्रीम लग रहा है। सेकंड सेज कि नन ऑफ देम सेट्स अप इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत लग रहा है, एक्सट्रीम लग रहा है, क्योंकि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में विच आर वाटर स्ट्रेस्ड, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज वाटर स्ट्रेस्ड करंटली। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेटमेंट सेज नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ये भी एक्सट्रीम लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आई एलिमिनेटेड ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स एंड आई मार्क्ड नन एज द ऑप्शन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर गिवन बाय यूपीएससी as well। ठीक है, इसके बाद the next question that where you can use some elimination is question number 71। now this is a question that I want to discuss because this is a question where elimination trick backfired on me, that is using elimination trick I got this question incorrect। now this question is related to MSME and MSME lending। if you look at the first statement, it says that MSME act
in under MSME Act, the medium enterprise is that under which the investment machinery is between 15 करोड़ एंड 25 करोड़. अब हमारा लॉजिक क्या कहता है, जब भी कोई डेटा है या कोई फैक्ट है, इट इज मोस्टली इनकरेक्ट. इस लॉजिक से तो मैंने ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट कंसिडर कर लिया, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए. चलो मेरे को लगा मैं 50-50 पे आ गया, अब तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा. सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लिया, ऑल द बैंक लोन्स टू एमएसएमई क्वालिफाई अंडर प्राइमरी सेक्टर. अब हमारा लॉजिक क्या कहता है, ऑल बैंक लोन्स है, एक्सट्रीम लग रहा है तो इसको इनकरेक्ट कंसिडर करो. मैंने इसको इनकरेक्ट कंसिडर किया, डी ऑप्शन मार्क किया, बट आई गॉट दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट. सो आई एम डिस्कसिंग दिस just to tell you that at times these elimination tricks will backfire also, but that does not mean that you do not believe in them. ठीक है, net these elimination tricks will only help you gain marks. ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही लॉजिक यूज नहीं कर रहे, एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज नहीं कर रहे, बस अपने नॉलेज बेस पे रिलाई कर रहे हो. अगर बस नॉलेज बेस पे रिलाई करोगे तो ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट कम रहेगा, एंड विथ लोअर अटेम्प्ट इट इज रियली टफ टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन that can be solved using some logic is question number 72. It is related to central bank digital currencies which was in news, तो question was expected on this. अब ये बोलता है कि it is possible to make payments in digital currency without using US dollar or SWIFT system. अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है तो डॉलर का क्या यूज होगा, इट इज पॉसिबल. एंड अगेन ऑलवेज कीप इन माइंड, जब कोई पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, जो कोई भी फ्यूचर में हो सकता है क्या, उस ऐसी बात चल रही है, जैसे पुराने साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते थे एप्लीकेशन बेस्ड, तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है. जब भी पॉसिबल, कैन दिस बी डन, इट कैन बी डन, इट इज पॉसिबल, ऐसे स्टेटमेंट्स है, दे आर मोस्टली करेक्ट. सो I with this logic I consider this correct. And the second statement says a digital currency can be distributed with condition programmed into it such as time frame for spending it. Again can be है, future में हो सकता है, तो I considered it to be correct and I might see as the answer, and that is the correct answer given by UPSC. ठीक है, सो जब हमेशा याद रखना, जब भी कोई पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, कोई भी फ्यूचर के रिलेटेड कोई बात चल रही है, मोस्टली वो स्टेटमेंट सही होगा. ठीक है, क्योंकि हमने भी नहीं देखा, ना यूपीएससी ने देखा है कि आगे जाके क्या होगा. ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड. नाउ with respect to central bank digital currencies, can you tell me the difference between e-rupee and e-rupee? These are two concepts related to central bank digital currency. Comment down below the difference between e-rupee and e-rupee. ठीक है, these are two concepts very important to know for this year's prelims. ठीक है, उसके बाद the next question which can be used where some elimination trick or logic can be used in this paper is, I believe, question number 89. Now in this question you can see the question is about stability and growth pact of European Union. Now it says there are three statements. First statement says it limits the level of budgetary deficit of countries of EU. ठीक है, second statement says कि it makes the countries of EU to share their infrastructure facilities, and thirdly it says कि it enables the countries of EU to share their technologies. अब आप अगर देखोगे तो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, नाम से क्या पता चल रहा है, ये समथिंग, इट इज समथिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक, राइट. इट इज मतलब इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिस्कल सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टेक्नोलॉजीज क्या काम करेंगी, इट शुड बी जस्ट लिमिटेड टू बजट एंड बजट डेफिसिट एंड अदर स्टफ्स रिलेटेड टू बजट. ये लॉजिक यूज किया. नॉर्मल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ बोल रहा है तो इकोनॉमी बजट के रिलेटेड कुछ होगा, ये लॉजिक यूज करके आई कंसिडर दिस टू बी करेक्ट, दीज टू बी इनकरेक्ट, एंड विथ आई मार्क्ड ओनली वन एज द ऑप्शन, एंड दैट वाज द क्वेश्चन दैट आई गॉट करेक्ट. ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड. whenever there is any word given in question, try to break down the word, try to decode the word. Like in yesterday's video of 2022 paper discussion, we saw the question related to rapid financing instrument. ठीक है, उसमें भी बस just by decoding the name rapid financing we were able to reach IMF. बाकी ऑप्शंस में रैपिड की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक हो या
एडीबी हो, वहां पे रैपिड की जरूरत नहीं है। वैसे ही स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ का पैक्ट है, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो बजट के रिलेटेड होगा, तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, now the next question where you can use some logic or elimination trick is question number 91. Very, this is question that I got with basic common sense and some knowledge. It is related to home guards. Ab the first statement says home guards are raised under the home guard act and rules of central government. अब देखो, हमने पॉलिटी में तो पढ़ा है कि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राइट? पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली होमगार्ड शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू समथिंग एक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे? सो आई कंसिडर दिस टू बी इनकरेक्ट। चलो, तो ऑल थ्री तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट सेज द रोल ऑफ होमगार्ड्स is to serve as auxiliary force to police in maintenance of internal security। ये बेसिक कॉमन सेंसिकल स्ट्रीट स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग है। जिन्होंने होमगार्ड को काम करते हुए देखा है, तो देखा है कि होमगार्ड कम इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज वेरी हाई लोड ऑन नॉर्मल पुलिस। जैसे पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र मस्ट हैव सीन कि होमगार्ड्स आर बीइंग एम्प्लॉयड ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी एंड गणेश विसर्जन। जब भी काम बढ़ेगा होमगार्ड्स को लाएंगे, तो ऑब्वियसली दे आर वर्किंग एज ऑक्सिलरी फोर्स, तो ये सही है। देन the third statement, to prevent infiltration on international borders, the border wing home guards battalion have been raised in some states। seems logical। बॉर्डर पे अगर काम ज्यादा बढ़ जाए तो ऑक्सिलरी फोर्स की जरूरत होगी, इसीलिए कुछ कुछ स्टेट ने किया है, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। आई फेल्ट इट इज लॉजिकल, करना भी चाहिए, तो आई कंसिडर दिस ऑल्सो टू बी करेक्ट एंड मार्क बी एज द आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सम अंडरस्टैंडिंग दैट पुलिस is a state subject। Can you tell me the entry number of police in state list? Comment down below the entry number of police under state list। तो ये नॉलेज था मेरा, एंड बेसिक ऑब्जर्वेशन कि हाँ होमगार्ड्स आर यूज्ड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज्ड वर्कलोड, तो दे आर ऑक्सिलरी फोर्स, तो दैट इज सेकंड इज करेक्ट। एंड थर्ड सीम्स लॉजिकल कि बॉर्डर स्टेट है, जब भी काम बढ़ेगा तो एक आध विंग बना के रखा होगा। ठीक है, after question number 91, now there is another question where you can use some elimination trick, that is question number 93। now I want you guys to solve question number 93 and comment down below the elimination trick that we had discussed in our previous video. Which elimination trick can be used to solve question number 93? do comment down below. After question number 93, like the next question that I got correct using some basic understanding of UPSC pattern and how UPSC thinks, how UPSC gives answers, is question number 99। now if you look at the question is asking you about green hydrogen। it says green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing of how many of the above industries। expected possibility जो हमने पहले भी देखा। ठीक है, तो वेन एवर देर इज सम पॉसिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, कैन बी, फ्यूचरिस्टिक पूछा है तो मोस्टली ऑल होगा, एंड आई मार्क इट, क्योंकि हाँ अभी भी नहीं है तो आगे जाके एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर प्लांट्स में कम करेगा, कार्बन एमिशन ऑयल रिफाइनरीज में भी कम करेगा, स्टील प्लांट्स में भी कम करेगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज यूज सम कार्बन लाइक फ्यूल्स, राइट, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर एमिशन। तो कुछ ना कुछ तो हाइड्रोजन फ्यूल यूज करके हम डिकार्बोनाइज कर सकते हैं। एंड सो अगेन इट इज सेइंग कि एक्सपेक्ट किया है, फ्यूचरिस्टिक है, तो सभी में कुछ ना कुछ हो सकता है आगे जाके। दैट्स व्हाई आई मार्क सी एज द ऑप्शन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर गिवन बाय यूपीएससी। ठीक है, सो टुमारो आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो ऑफ 2021 using some basic logics, basic elimination tricks। stay tuned for the video, and also if you want any specific video or any specific issue to be addressed, do comment down below। ठीक है, all the best for upcoming prelims।